read aloud with me. Okay. Now today we'll do a lot of things. Now tell me, what is your verb to know? Savar is to know. Tell me, Jashan, Prafula. See, my friend, today read aloud, please. Oui, Yes, I need your shape of your tongue. oui, monsieur. Savar is to know. So what is the Savar. conjugation of savar verb? Tell me. Je sais, tu sais, Je sais, tu sais, Jesse, il Tuesday, sait, nous savons, Hillel says, nous vous savons, savez, il vous Savo, savent, savez, Save, et le il savent. savent. But over here, Ilelsav. learning the past of savar. You know what, my friends? If this is an irregular verb, for example, the verb do not have ending. Savar is your irregular verb. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Can you hear me now? Am I audible to you, my friends? One sec, let me check. Be online. Now, for example, we have a verb savar, right? And savar is to know. So the past of irregular verb is su. The past of SU. irregular verb is su. And as a rule of past, we need to use our verb or either at verb. As rule of past, we need to use our verb either, tell me, at verb. Say Claire. Okay. Yes, So I will say, Oui, Claire sir. yes, you, I knew. Tu as you knew. Because we need to Just understand monsieur. the past of the past. Is it clear to you, my friends? Tell me if you know. Clear? Oui, Okay. Now, for example, we have, if I will say, I saw an advertisement in the newspaper. What is I saw? We have a verb voir, and voir is to see. My j'ai friend, can su you une understand? annonce No, 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 dans no. le I journal. saw, I saw. So that is j'ai vu because voir past is view. For example, the savar past is su and the voir past is view. Yeah. And what is the conjugation of voir verb in terms of present tense? Tell me. Je vois, I see, present tense. Your Tu voice is vois, breaking. tu vois. C'est clair. What is the conjugation of present tense? Je vois, je vois, il, elle voit, nous voyons, Oui, vous voyez, il, elle voit. सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. Acha, okay, one sec. Let me check. So basically, we have a verb voir. Voir is to see because we need to use these terms. These are irregular terms. Savoir is su past, voir is view past, and the conjugation of voir is je vois, which we already have done. Tu vois, il, elle yes. voit. Now you say I saw an advertisement. What is a? A, which is un, On un, they. me. I'm saying I saw an advertisement in the newspaper. Noon. What is I saw? Tell me. Passé Je J'ai composé. vu, J'ai j'ai vu. vu. vois. J'ai Oh vu boy. une publicité dans le journal. J'ai vu, I saw, J'ai vu une une publicité, publicité, une publicity, publicité dans le advertisement journal. dans le journal. Is it clear to you? We say, and the moment I saw an announcement, the moment, pen down please, say the moment au moment où j'ai vu une annonce. Au moment, pen down please. Au moment and the moment où where j'ai vu, I saw an announcement. J'ai vu une annonce. Et au moment and the moment j'ai vu une annonce. I saw an announcement. I thought for you. I thought about you. What is your vocab to think? Tell me.
Pense. Pensez. Pense. Passé composé of e-learning verb is what? Aigu? Tell me. Aigu. Pense. Yeah. J'ai pensé pour toi. I thought about you. I thought for you. C'est clair. I thought for you. J'ai pensé pour toi. Ce que tu en penses. What do you think about it? Ce que tu en penses. What is on? On is what? It we have done already, right? What do you think about it? Ce que tu en penses. What do you understand about it? Ce que Ce que tu en en comprends. comprends. What do you understand about it? What you observe in it, ce que tu en observes. What you explain on it, ce que tu en expliques. Ce que सर tu en सर nasignes. क्यों लगाया है? Mhm. सर क्यों लगाया है? Ce que what? Ruben, what? ओके ओके यस Ce que, यस मैं my सर उसके friend. साथ कंफ्यूज हो गई थी No, no, समथिंग के साथ. no, no, no. Ruben, we are picking the pace now. Please practice your stuff, right? Please. ठीक. Did you practice the last session, the weekend I sent it to you? यस यस सर. Ce que tu en observes, what you observe on it. Ce que tu en expliques, what you explain on it. Ce que tu en assume, what you assume on it. Ce que tu en comprends, what you understand on it. Is it clear to you? C'est clair. यस Le, क्लियर सर. la, le. ले See what's the article? The, le, la, द le. Voir is द to see. I will say, I saw something yesterday. J'ai vu quelque chose hier. quelque chose hier. Hier, c'est autre quoi? Yesterday. Pen down, please. We saw something day before yesterday. What is before? Before is avant. What is before? So before yesterday, avant-hier. Avant-hier. Avant-hier, c'est autre quoi? Tell me. Day before yesterday. Nous avons vu quelque chose. Nous avons is what? We saw. Nous avons, nous avons vu quelque chose. C'est clair. Nous avons vu. C'est clair. We saw. Quelque chose, something. Day before yesterday. Avant-hier. What is avant-hier? Tell me. Day Day after. before Day before. Yesterday. Nous avons vu quelque chose avant-hier. Now we have a vocab oublier. Oublier is to forget. oublier. What is oublier? Tell me. Oublier is to forget. Now what is the conjugation of e-learning verb? J'oublie, tu oublies. Conjugation of present tense. Tu oublies. Elle oublie. C'est clair. Oublier is to forget. What is the past tense of e-learning verb? E-agu. I forgot. J'ai oublié. J'ai oublié. I forgot. If I will say, oh, je l'ai oublié. What is that? Tell me. Je l'ai oublié. I forgot that. We are conjugating that with le, la, le. Je l'ai oublié. I forgot that. Oublier is to forget. Je l'ai oublié complètement. You see, oh, I forgot that completely. Now make a sentence. We forgot that completely. What do you will say? We forgot that completely. Tell me. Nous l'avons. Le. Nous l'avons Nous complètement l'avons oublié. oublié. Forgotten. Completely. Nous Complete. l'avons oublié Oublié. complètement. Completely. Complètement. Nous l'avons oublié complètement.
So this is your conjugation. Oublier. J'oublie, tu oublies, il oublie, nous oublions, vous oubliez, ils oublient. C'est clair. Voir verb conjugation, present tense. Je vois, tu vois, il elle voit, nous voyons, vous voyez, il elle voit. Make a sentence. You knew something yesterday. Tell me. What is you knew something yesterday? Tell me. Ruben. You. Hmm? You knew something. Tu as su quelque chose hier. C'est clair. We knew something day before yesterday. We knew something. Tell me, nous avons su quelque chose avant-hier. Nous avons su quelque chose avant-hier. Yeah. Day before yesterday. Je sais quelque chose aujourd'hui. I know something today. Conjugation, je sais, tu sais, il, elle sait. Nous savons, vous savez, ils, elles savent. C'est clair. Now, what is deed verb? Tell me. Deed is to say. What is deed past? D-I-T, D. Make a sentence. D. No, no. D. He. Make a sentence. I told you yesterday. Informal. Je t'ai dit hier. Jade. Jade. The vowel. Je t'ai dit hier. Make a sentence. I told you a lot of times. Jade. I told you a lot of times. Je t'ai dit beaucoup de fois. Beaucoup de fois means many times, many times. One time we have ton. Ton is time, time check. Ton is time. But one time is many times, multiple times. Fois. C'est autre fois, beaucoup de fois. C'est clair. Je t'ai सर dit. जो TEMPS जो है वो सिर्फ once. This is your timing, time check. What time is it? The train will arrive at 2 o'clock. The train will arrive at 6 o'clock. So that timings. One time we have time, many times. Fois, bar, kitni bar. Ab kitni bar, there's also time, how many times. Sense is different. So beaucoup de fois. Fois is time. Is it clear to you? Clear? Is it clear to you? What is the difference between fois and ton? Tell me. Time is a single time and four is many times. Many times in terms of bar. That is bar. Beaucoup de fois. Many times. Kitni bar. I told you kitni bar. Many times. Je t'ai dit beaucoup de fois. One second, team. I'm just getting one phone call. Be online. Je t'ai dit beaucoup de fois. Je t'ai dit beaucoup de fois. I told you many times. Is it clear to you? Clear? Okay. Je t'ai dit beaucoup de fois. I explained you yesterday, but you did not understand me. One second, be online.
Okay, so sorry. One is I explained you yesterday, but you did not understand me. I explained you. What is I explained you? आप अपने आप बनाओ हरप्रीत. फहाद यू डोंट पार्टिसिपेट. फहाद मैं आपको एक चीज दोबारा बोलता हूँ गाइस, सुनो मेरी बात को. आप जितने भी आप म्यूट पे बैठे होते हैं ना, आप सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से. इससे अच्छा तो आप क्लास से मत आओ अगर आपको म्यूट पे बैठना है. आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट. मैं बहुत अपफ्रंट बोल रहा हूँ आपको आज, क्योंकि मैं बार बार रिपीटेशन पे आपको चीजों को समझा रहा हूँ. अगर आपको, आप किसी जिम को ज्वाइन करते हो, आप जिम जाते हैं जिम, राइट, वहां पे सिर्फ ट्रेनर एक्सरसाइज कर रहे हो और आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो. आपकी बॉडी शेप में आएगी? टेल मी यस और नो. ट्रेनर क्या बोलेगा? इससे बेटर आप जिम में मत आओ, यही बोलेगा ना आपको. क्लियर? सेकंड, ऐसी हमारी लैंग्वेज है. आप जब तक ट्रेनर के साथ नहीं बोलोगे, आपकी आपकी शेप नहीं आएगी. सेशन एंड हो जाएगा, आपको बोलना ही नहीं आएगा. अगर आप वर्क प्लेस में हो ठीक है, दैट्स फाइन, बट हर बार थोड़ा वर्क प्लेस में हो तो भी हर बार आप म्यूट पे बैठे रहेंगे. आपको अपनी, मेरे साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो आप सभी? आप लोग उस लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हो जहाँ पे फटाफट चीजों को आप डिफाइन करो. कितने सारे आपने सेशंस मैंने आपको करवाए हैं, कितनी आपको ऑडियोज आपको दिए हैं, तो आप बोलो व्हाई आई विल स्पीक. सेंटेंस क्रिएट करें प्लीज, एंड ऑल ऑफ यू प्लीज. नाउ what I would say, Fahad, please make a sentence. I explained you yesterday, and फटाफट you have to create. आज पता लगेगा मेरे को कि आपने वीकेंड में कितना प्रैक्टिस किया है. I explained you yesterday, but you did not understand me. Fahad, tell me. But you did not. छोड़ दो तो One इंग्लिश. second. Speak in I explained you yesterday. फटाफट. I explain. Je te expliqué. Je t'ai Uh, je te expliqué. EQ. Y, But मैं y, but you did not मैं understand me. मैं tu. Moi. What is you did not नहीं understand? Past tense. Comprendre past is what? Compris. Now the past is compris. tu n'as pas compris. If you say you did not understand. Tu n'as pas Tu compris. n'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. You did not understand me. Tu ne m'as pas compris. Me. Compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as C'est pas clair. compris. Yes, You did not understand me. Is it clear to you, my friends? Tell me yes or no. yes, yes. You did not. You Yes, tu sir. ne m'as pas compris. Now over here we have. I explained you yesterday. Je t'ai expliqué hier. Mais tu ne m'as pas compris. So basically, comprendre past is compris. Compris. The past of comprendre is what? Tell me. Compris. Is it clear to you? Yes. Now, for example, what is the conjugation of deed verb? Tell me. Je dis, D, tu dis, Tu dis. il a dit, D, nous disons, nous disons, vous vous dites, disiez, il, Il a dit. elles il dit. disent. Is it clear to you, my friends? Yes. What is the conjugation of faire verb? Tell me. Je Faire. fais, Je fais, tu tu fais, fais, il, elle fait, il nous fait, faisons, nous vous faisons, faites, vous faites, vous Vous faites, faites. ils, Elles elles font. font. Very good. font. Faire past is FAIT, fair. Fait. Did. Fair past is Did. FAIT. I did it. I did it. Je l'ai fait. Je l'ai fait. I did it. Le is what? I did that. Je l'ai fait. C'est clair. Is it clear to you, my team? Yes. Clear? I do that. Je le fais. Je l'ai fait past. Je le fais. Je le fais. I do that. Je le fais. Is it clear to you, my team? Why you do not consider me? How to make? Pourquoi? 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 Why? Pourquoi tu ne me Tu considères pas? Tu ne me comprends pas? me Tu ne me considères. Con- This we have grave. considères. Considère. Tu ne me considères pas. Ok? Tu ne me comprends pas.
You don't understand me. Tu ne me comprends pas. Comprendre, comprends. C'est clair. Tu ne me comprends pas. You did not consider me. You did not. Tu ne m'as pas Considère. considéré. सर सर जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस में पा लास्ट में आया, यहाँ पे इन बिटवीन Where? ऊपर वाला सेंटेंस में पा लास्ट में आया, इसलिए है कौन ना, सी because that's a rule. Between na and pa, we need to apply verb. Tu ne me considères pas. Over here, you have two verbs, avoir, and second is considérer. So, with first verb, that is tu ne m'as pas considéré. C'est clair? Because Yes. first is your consider present tense. You don't consider me. Tu ne me considères pas. Between na and pa, what is negation? Tell me. Between na and pa, you need to apply verb. Tell me yes or no. Between ne and pas, you need to apply verb. Ne considère. C'est clair. Ne ओके ओके considère pas. Over here, past tense is what? Na. Now, what is that? Tu as considéré. EAQ. Tu as considéré is what? You considered. But over here, you have second verb. First verb is a. Create two verbs, right? Second is considéré. So, tu don't negation. Tu n'as pas. Tu n'as pas considéré. C'est clair because the first verb would be between na and pa. Then over here, consider is your second verb. In present tense, consider is your first verb. Tu ne considères pas, tu n'as pas considéré. C'est clair. Is क्लियर it सर clear? We have a verb rejeter. Rejeter is to reject. rejeter What is rejeter? Tell me. Rejeter is reject to reject, my friend. C'est clair. Why you reject me? Pourquoi tu me rejettes? Pourquoi tu me Un rejet. rejettes? Tu m'as rejeté. You rejected me. Past tense. Tu m'as rejeté. If we have ague. You neglected me. Tu m'as négligé. Ague. Is it clear to you? Tu m'as clear? Négligé. Is it clear to you? Okay. Tu m'as ignoré. You ignore me. Ignoré. Ignoré. EAQ. You deny me. Tu m'as dénié. You deny me. Is it clear to you? Tu m'as dénié. You deny me. Is it clear to you? Clear, my friend. You denied me. Past tense. Tu m'as dénié. Past tense. EAQ. Is it clear to you? Tell me yes or no. Tu m'as dénié. You did not communicate with me. Tu ne m'as pas communiqué. EAQ. Tu ne m'as pas communiqué. EAQ. You did not precise the information. Precise is what? Préciser. Tu n'as pas précisé. EAQ, my friends. Tu n'as pas précisé l'information. The information. Tu n'as pas précisé l'information. The information. Is it clear? Clear? Aujourd'hui, il est très important de préciser l'information. Aujourd'hui, today. It is today very important. It is very important to precise the information. information Il est très important de préciser l'information. Mais tu n'as pas fait, but you did not. Tu n'as pas fait. Ce qui tu n'as pas fait, which you did not. Ce qui, which tu n'as pas fait. Il est très important de comprendre. It is very important to understand.
Il est très important d'évaluer le document. It is very important to evaluate the document. C'est clair. Tell me yes or no. Oui. Oui, sir. Now make a sentence, my friends. I wanted pen, and you will create your own way, own sense. I wanted to do something today. I wanted to do something today, but I could not. Pen down. I wanted to do something today, but I could not. Tell me. I wanted is what? J'ai voulu. Voulu. Je, J'ai voulu because je vouloir, Pepe is J'ai voulu. voulu. J'ai voulu. voulu, J'ai wanted. I To wanted do to is do past. something today. J'ai voulu quelque chose J'ai aujourd'hui. voulu faire voulu quelque chose faire aujourd'hui. Faire quelque quelque chose chose, aujourd'hui, Mais I could mais not. je n'ai Je pas n'ai pu. pas pu. Je mais, n'ai pas pu. mais, je Je n'ai pas pu. C'est clair. n'ai, Yes, sir. n'ai, Mais Je je n'ai n'ai pas pas pu. pu. Pouvoir, could, can, सर pouvoir. सर जैसे आप NAI लिख लेते हो ना, इसको अभी हमें सोचने में टाइम लग रहा है। नहीं रूबन, अब नहीं लगना चाहिए टाइम। प्रैक्टिस करो, कितना सारा प्रैक्टिस किया है। ज न पा इज नेगेशन। ज न पा फ्यू, इसको प्रैक्टिस करना है हमें। बहुत प्रैक्टिस करना है लैंग्वेज में। ये रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग में प्रैक्टिस करना है। ज न पा फ्यू बोलना है। आपको सभी को अपनी बॉडी को शेप देने के लिए 2 आवर्स जिम करना है। अगर आप हाफ एन आवर जिम करें तो कुछ नहीं बनेगा। अब मतलब आपको अगर अपनी टंग का मूवमेंट देना है तो आपको 2 आवर्स कंसिस्टेंट इन ऑडियोज पे काम करना है। मैं je n'ai pas pu, I could not। प्रैक्टिस करें प्लीज। je n'ai pas pu, सिंपल न पा इज नेगेशन, आवर कॉन्जुगेशन इज je n'ai pas pu। से क्लियर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, बेस्ट पार्ट तो है कि आपको सारी ऑडियोज मिल रही हैं, रिकॉर्डिंग सेशंस मिल रहे हैं आपको। जो हम सेशन कर रहे हैं रिकॉर्डिंग पे है। सर प्रैक्टिस कि अगर आप मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस सेशन को कितनी बार सुन रहे हो? सुने मल्टीपल टाइम्स। जब तक आपके ईयर बिल्कुल स्ट्रांग ना हो जाएं, सुनते रहे सेशंस को। अपनी वॉइस को लेके आए। जैसे लिखें आई हैड टू डू दैट बट आई I कुड नॉट। पास्ट टेंस। टेल मी। I have. je J'ai let fait, you je je l'ai let you। tué. the verb past is due। je let you। मैं but I could not। tell me। je n'ai pas pu। I had to speak to you but I could not। tell me। j'ai dû parler avec toi। j'ai dû parler avec toi। c'est clair। Oui, But I could not। मैं je n'ai pas pu। Je n'ai pas pu. je n'ai pas pu. c'est clair। Or either we can say, you know what is Lemparve, my friends? Lemparve is again your past. The moment we
talk in the sense of I used to do that. We have done this thing also. I used to do that. I was enjoying was were plus ing format. I used to come on time. I used to do that. And the moment we'll apply the verb in past is in l'imparfait. You know what is l'imparfait? You can count as in present continuous tense. You can count as in I used to come on time. I used to do that. That sense. And also the past activities. For example, what is the formula of l'imparfait? This is your tense. AIS. Formula of l'imparfait. AIS. AIT. IONS. IEZ and AIENT. How to make l'imparfait? For example, we have verb devoir and devoir is to must. In order to make l'imparfait, we need to conjugate the verb with new conjugation, present tense. Devons, remove ONS, what you left, DEV, so apply DEV, 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 DEV. Je devais. Je devais is also I had to. Tu devais is also you had to. Il, elle devait. Nous devions. Vous deviez. And il, elle devait. Is it clear to you? I had to speak to you. Je devais te parler. I can say like that. Je devais te parler. Is it clear to you? Je devais te parler. Now we say I wanted to speak to you. How to make in l'imparfait? What is vouloir verb? New conjugation. Nous voulons. Remove ONS. So what you left with? VOUL. Apply formula. AIS. Je voulais. C'est clair. Formula you need to understand. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ and AIENT. Je voulais. I wanted to speak. Je voulais parler. I wanted to speak to you. Je voulais te parler. C'est clair. सर एक बार ना ये मुझे बताना कि ये हम ऐसे चेंज क्यों करेंगे? L'imparfait. पास्ट एक्टिविटी बताने के लिए। Past activities के लिए हम इसको यूज करेंगे. L'imparfait is basically your was were plus ing. Your I used to do that and past also. And past also. We have one past is our conjugation plus past tense of the verb, right? We have second past which is l'imparfait. Imparfait is very important in French language. Is it clear to you? Because in your TEF section A, you need to write something in past, writing section, 100 words. So we need to aware l'imparfait, how to create l'imparfait. Now if I will say, I could speak, either you can say pouvoir is to can. So how to make l'imparfait? Go for new conjugation, pouvons, remove ONS. What is je? AIS. So je pouvais. I could speak, je pouvais parler. I could eat, je pouvais manger. C'est clair. Is it clear to you? So we need to understand this sense. I could learn. Either I can say j'ai pu apprendre. J'ai pu apprendre. Either I can say je pouvais apprendre. Is it clear to you, my friends? C'est clair. Tell me, is it clear to you? Yes, sir. All of you. Yes, sir. Make a sentence. I could define. Je pouvais
Je Definir. pouvais Définir. Definir is to define. I could define. I could explain. Je pouvais je Je pouvais expliquer. expliquer. Is it clear to you, my team? yes sir. C'est clair? I could precise. Je pouvais Je pouvais préciser. préciser. I could lose. Je pouvais perdre. Perdre is to lose. Perdre. Repeat after me. Perdre. Perdre is your lose. Is to lose. Perdre. Perdre. Perdre is to lose. Lose. Is it clear to you? Yes. Clear? Now, my Yes, friends, yes. I'm going to share this recording, and obviously, I'm going to share two recordings. This recording, obviously, you need to practice, and I will share one more recording simultaneously with one more recording. You need to Sir, write down the content with these recordings. सर Mm-hmm. आप एक प्रैक्टिस नोट्स दे सकते हो जैसे हम इनकी ट्रांसलेशन खुद से ट्राई करें करने की? आप खुद भी कर सकते हो ये सारा देखो ट्रांसलेशन तो आप खुद बना सकते हो ना. आई कुड स्पीक, आई कुड अंडरस्टैंड, जो जो आपको वर्ब्स दी गई हैं बैठ के बनाओ ट्रांसलेशन. वही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको बैठ के बनाओ, अपने सबमिट करो ट्रांसलेशन. Lot of ओके सर. content you have lot of vocabulary. I could assume, I wanted to assume, I must assume, I had to assume. ये प्रैक्टिस जब आप करनी शुरू करेंगे और जब उसमें देखो हर एक चीज आपको एवरीथिंग नीड्स टाइम. यू ड्राइव अ कार, यू नीड प्रैक्टिस. यू कुक, यू नीड प्रैक्टिस. तो आपको ये प्रैक्टिस करना है. क्लियर? कॉन्जुगेशंस कर करके मुझे भेजें, क्योंकि ये अब एंड है ग्रामर ग्रामर का जो आपको जो मेजर चाहिए. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी स्पीकिंग की ओर मूव करेंगे, सेक्शन बी की ओर मूव करेंगे, जहाँ पे हम कल से सेक्शन बी के टेम्पलेट्स करने शुरू कर देंगे. हाँ, बहुत सारी इसमें ग्रामर अभी और आएगी, वो ग्रेजुअली आएगी, तो यूल कम टू नो. से क्लियर? कल से हम लोग स्पीकिंग पैटर्न में बिल्कुल थोरोली एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव डन मल्टीपल एक्टिविटीज. आई टोल्ड यू, आई सेड टू यू, आई सो दैट. क्लियर? सो ये प्रैक्टिस करें. I will share many videos I can share, but I will share two videos. This video, this recording, and one more recording. Practice, and कल से हम लोग सेक्शन बी में एंटर कर रहे हैं. Excuse me, Okay? sir. Sir, I have a doubt. Like, so when we had the sentence "I had to" and "I must," so दोनों में दवार ही लगेगा. बिल्कुल दवा लगेगा. यस. दोनों में ही ना. बिल्कुल. पर एक हम फालवार भी यूज करते हैं, इला फालू, इल्फो, वो बाद में right. बताऊंगा. क्लियर? Okay. ओके. चलो ये करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू शेयर टू रिकॉर्डिंग्स. उन दोनों रिकॉर्डिंग का कंटेंट मुझे डाल के भेजें प्लीज. ओके? या Hmm. ठीक है Yes, टीम. sir. चलो. au revoir. Yes, sir. अभी तो